Hi everyone, welcome back to my class. This is Rumana Ali. I hope you all are doing well. In today's class, I'm going to explain you a lesson, soil pollution. In this lesson, we are going to discuss about the soil, its properties and also the causes and controlling measures of the soil pollution. So our environment is composed of land, air and water, and there are some layers and there are the different mediums that makes up the environment, and that layers are atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. So these are the mediums. These mediums makes up our environment. These mediums of these layers were very pure, but nowadays it is not so pure because of some unwanted or the waste materials are being added up in these layers. So this leads to the problem in the environment. The imbalance is creating in the environment because of the unwanted substance that are being added to these mediums. So the waste material or the unwanted substance are being added to air, land and also to the soil and also in the water. That leads to many problems in the environment. If we talk about the atmosphere, that is air, then in the air there are so many gases present like carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen and many more. So all these gases are present in a particular percentage. The particular percentage is given for the presence of all these gases in the atmosphere, but if the percentage or the ratio of these gases in the air imbalances, or if it is increased or if it is decreased, then that leads to the imbalances in the environment. That also creates many problems in the environment, and these problems are nothing but pollution. Whatever the unwanted substance or the waste materials are being added to all these mediums, that substances are called as pollutants and the process is called as pollution. So pollution means addition of waste material or the unwanted material to the different mediums of the environment. So pollution can also be defined as the raise of any one particular substance in any of these medium that creates the disturbance in the environment. That is nothing but pollution. The main reason for the pollution is industrialization, urbanization and overpopulation. So these are certain problems that has been identified as a cause of pollution. Industrialization means setting up the industries by clearing the forest land, and that industries are producing many goods and many products to the public, and to produce that products or to produce that goods they need a lot of substances. They are trying to use the new substances in order to produce the goods, and as they are using the other substances in order to produce the goods, that waste materials that are generated during the process of production of the goods, they are not disposable. They cannot be mixed up with the soil. They cannot be decomposed. So that type of material are also dangerous for the soil. That leads to the soil pollution. And urbanization. Urbanization means setting the homes or houses are made by cutting down the trees. That is deforestation. By going for the deforestation, they are making the houses for the people, for the population. But that is not a good way. So this urbanization also leads to pollution. So in urbanization, as they are clearing up the forest land by cutting down the trees and making the houses, and the house waste are dumping here and there in such a way that there is not a proper disposal system present. So that leads to the soil pollution. And the other reason is overpopulation. As the population is growing day by day, the demands of the product is also increasing. So to supply the products or the goods to the people, they are using some measures that leads to the soil pollution. That means the farmers are using insecticides or pesticides, that harmful chemicals, to produce or to increases their production. So as they are using the chemicals to increase their production, this is not a safe measure to increase the production. This is not a proper way. So this leads to the pollution, soil pollution. As the chemicals are added up in the soil, it leads to the pollution and the soil loses its fertility by the addition of chemical substances in it. तो अभी हम बात करेंगे soil pollution के lesson के बारे में. Environment
ये सारे मीडियम्स का बना हुआ है, जैसा कि है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर यानी एयर, लिथोस्फीयर यानी लैंड, बायोस्फीयर यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स इन दिस फेस, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर। ओके, तो ये सारे चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। ये सारे लेयर्स बहुत ही प्योर होते हैं और ये सारे एक दूसरे में इंटरेक्शन बताते हैं। लेकिन नाउअडेज अभी पीपल की एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारा एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और ये जो इंटरेक्शन है ये लेयर्स के बीच में वो भी लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या फिर अनवांटेड सब्सटेंस होता है, अगर वो ये सारे लेयर्स में, ये सारे स्फीयर्स में ऐड किया जाएगा तो उससे एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा और उस इम्बैलेंस को, उस डिस्टर्बेंस को हम बोलेंगे पॉल्यूशन। और जो भी वेस्ट मटेरियल ऐड हो रहे हैं इन सारे स्फीयर्स में वो पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। सॉइल पॉल्यूशन के 3 मेन रीजंस है। एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट अर्बनाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज सेटअप करना है और वो इंडस्ट्रीज की जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है वो ऐसा है जो कि डिस्पोज नहीं होगा, तो उस तरह के वेस्ट मटेरियल से भी सॉइल को बहुत सारा नुकसान होता है और उस चीज़ को हम बोलेंगे सॉइल पॉल्यूशन। फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज प्रेजेंट होते हैं उसको कट करके हाउसेस बनाना है और फिर वो हाउसेस का जो भी वेस्ट है डंप कर देना है, तो इससे भी सॉइल खराब हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, तो इससे भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जैसा इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट्स का डिमांड भी वैसे ही बढ़ रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट्स को पीपल में और पॉपुलेशन में सप्लाई करने के लिए फार्मर्स ऐसे मेजर्स फॉलो कर रहे हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जैसा कि है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो इस केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से सॉइल खराब हो रही है, जिसको हम बोलेंगे सॉइल पोल्यूशन। बिफोर वी स्टडी अबाउट सॉइल पोल्यूशन, लेट अस सी first what is soil. So you might think that soil is the pieces of rocks. Of course it contains the pieces of rocks, but the rocks alone cannot form the soil. There are some other substances present that forms the soil. The powdery rocks cannot be called as soil. So let us see what are the components that forms the soil. So here, along with the rock particles or along with the pieces of rocks, some mineral particles are also present. So here 45% of the soil contains mineral particles and 25% of the soil contains air, and likewise 25% of the water is present in the soil, and remaining 5% organic matter is present in the soil. Organic matter is very important, and this organic matter can be broken down into simple or can be broken down into usable nutrients or the minerals by microbial activity. There should be very good microbial activity in the soil, and there should be a reaction called decomposition should takes place in the soil by the microbial action, so that the decaying or the organic matter can be converted into some minerals or the nutrients that can be absorbed by the plants to show their growth. So this organic matter is very important for the growth of the plants. So these are some of the components that forms the soil, and the good quality of the food depends upon the quality of the soil. So if the soil is of good quality and if the crops are grown in that good quality soil, then the products which we get from the plants, that is also of good quality, and the people who consume that products will also be healthy, and the people who consume that good quality products will be healthy. So in this way the quality of the product is depends upon the quality of the soil. तो अभी हम बात करेंगे what is soil. सॉइल होती क्या है? तो सॉइल के अंदर सिर्फ पार्टिकल्स, रॉक के पीसेस प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि दूसरे कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि है मिनरल पार्टिकल्स, एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर ही सॉइल फॉर्म करते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स अगर अच्छे से प्रेजेंट होंगे, यानी प्रॉपर परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे, तब वो सॉइल को हम गुड क्वालिटी सॉइल बोल सकेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐसा मैटर होता है को कन्वर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिनरल्स में,
ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होती है वो वाली सॉइल गुड क्वालिटी की होती है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, यानी मिनरल पार्टिकल्स, एयर, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो जो भी उसके अंदर क्रॉप ग्रो किया जाएगा वो वाला क्रॉप भी अच्छा होगा, और जो पीपल उसको कंज्यूम करेंगे वो हेल्थी रह सकेंगे। सो दिस इज अबाउट the components of soil. Let us discuss how is soil formed. We know that the rocks are broken into some smaller pieces and that pieces can be converted into soil. The rocks are broken down into some pieces and that forms the soil. So in this way the weathering of rock, weathering means breakdown of the rock. The weathering of rock can form the soil, but it is not as simple as I said you, but the process of soil formation is not simple. It is a very complex and steady process. It is a very complex and steady process. For the formation of 1 inch of topsoil, it will take 100 to 1000 years of time. So this much of time is required in the formation of a soil by weathering of a rock. But it depends upon the parent rock. Some parent rock may hard, that takes a longer period of time to break down, and some parent rocks will be soft and smooth, that takes not much longer time to break down. So in this way it depends upon the parent rock, and it also depends upon the location where the rock is present. So the rock may be found near the streams, or it may be present in the desert region, it may be found in the ice mountains. So depending upon the location also it takes time to break down and to form the soil. If we take the example of land and how the soil is formed by weathering of rock. So the rocks can be broken down into smaller pieces, but how? So they can be broken down into smaller pieces by cooling, by heating, and by air, by wind. So these are certain factors which helps the rocks to break down itself and to form the soil by heating, cooling, thawing, and by wind, water. All these factors are responsible in the formation of a soil by weathering of rock. And here we'll take one example, that if we take a test tube and if we heat it, and after heating immediately if we pour some water in that, or if we keep that test tube in a beaker that is filled with water, we can see some cracks in the test tube. The test tube may break. So because of the expansion or because of the immediate expansion and contraction, the test tube breaks. Likewise, the soil can also be broken down by immediate expansion and contraction. So if we heat up the rock for few hours and then if we throw that rock in a water, we can find some cracks over its surface. In this way the weathering of the rocks takes place, and after a period of time that pieces of rocks can form the soil. It can be broken down and it can help in the formation of a soil. So in this way by immediate expansion and contraction the formation of soil takes place. So the soil formation is a process which is very slow, steady and a gradual process. It takes a longer period of time. So it is called as a steady and gradual process. Now let us see the layers of soil. So there are 3 layers that can be seen in the soil, and that are top layer, middle layer and bottom layer. In the top layer organic matter is present and some microorganisms are also present in the top layer of the soil. This is a very important layer for the growth of the plants. The plants can show the growth because of the presence of the organic matter and the microorganisms in the top layer of the soil. So this layer is very important for the growth of the plants. And the middle layer of the soil contains minerals. It is a store of minerals and nutrients, and water is also present in this layer. And in the bottom layer of the soil we can find presence of parent rock. It is an inactive layer where the parent rocks are present. So in this way these 3 layers of the soil shows the presence of the different materials, and the top layer is very important for the growth of plant as it contains organic matter and microbes. We have already discussed that these microbes show its action and helps in the conversion of this organic matter into some usable forms, and that usable forms of the minerals and the nutrients can be absorbed by the plants. That helps the plants to show its growth and to carry out the other activities in the plant body. So this is about the layers of soil. तो अभी हम बात करेंगे कि soil
किस तरह से फॉर्म होती है। एक बेसिक प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी रॉक ब्रेक होता है स्मॉलर पीसेस में और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। 1 इंच सॉइल फॉर्म करने के लिए 100 to 1000 ईयर्स ऑफ टाइम लग जाता है। तो ये एक ग्रेजुअल और स्टीडी और स्लो प्रोसेस है। सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो कि पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो पेरेंट रॉक हार्ड होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ब्रेक डाउन होने के लिए, लेकिन अगर वो सॉफ्ट और स्मूथ होता है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ब्रेक डाउन होने में। ये वाला प्रोसेस लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है, यानी पेरेंट रॉक्स कहाँ पर प्रेजेंट है। ये स्ट्रीम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में भी और आइस माउंटेन में भी। तो लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो कितना टाइम लगेगा सॉइल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पीसेस में हीटिंग, कूलिंग, थॉइंग, विंड और वाटर, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रॉक को ब्रेक होने के लिए हेल्प करते हैं। और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी क्विक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी हीट करते ही अगर हम उसको कूल डाउन कर देंगे तब भी रॉक के ऊपर क्रैक आ जाएगा। तो क्विक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो रॉक को वेदर होने में यानी ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म हो सकती है। अब ये बात करेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल की। सॉइल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। टॉप लेयर में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाले लेयर में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। मिडिल लेयर में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर स्टोर किया हुआ होता है। और बॉटम लेयर जो कि एक इनएक्टिव लेयर है, इसके अंदर पेरेंट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।